Good morning, class. Today we will discuss the next topic of the chapter, tropical deciduous forest. Previously, we discussed the tropical rainforest, evergreen forest. So, in that particularly, we notice the characteristics and animal life of the forest. Now, tropical deciduous forest, they are widespread forest in India, and they can be divided into two categories: the wet forest and the dry forest. So, the specialty of these forests are they uh, mm, are called the monsoon forest and spread over all the region receiving rainfall 200 centimeter and 70 centimeter till. So trees of these forest type shed their leaves for about 6 to 8 weeks of dry summer. And on the basis of availability of water, these forests are further divided into moist and dry deciduous, and the former is found in areas receiving between 200 to 100 centimeter, means the wet forests are found in 200 to 100 centimeter region where the rainfall take place, and these forests exist therefore mostly in the eastern part of the country. Eastern part of the country, that is like when we recall from this Assam region, okay, this part. And they are mostly eastern part of the country, northern eastern states, and along with the foothills of Himalayas, Jharkhand, West Bengal, West Orissa, Chhattisgarh, and eastern slope of the Western Ghat. Teak, the most dominant species of the trees, and bamboo, sal, shisham, sandalwood, kher, kusum, arjun, mulberry are other commercially important species are found in these forests. So another is the dry deciduous forest, the second part of it, that is lie in 100 centimeters to centimeter rainfall, and these forests are found in the rain part of Peninsula Plateau. Means you can understand when we talk about these two categories. So second part आपका यहाँ पर है और फर्स्ट पार्ट आपका ये और ये इस तरह का रीजन है. So, forests are found in the rainier part of the Peninsula Plateau, and these the plains of Bihar, Uttar Pradesh. There are open stretch in which teak, sal, people, neem grow. A part of these region has been cleared for the cultivation. Some part has been used for grazing. तो ये जो ड्राई रीजन वाले हैं ज़्यादातर इनके कुछ पार्ट पर तो इनको क्लीन करके एग्रीकल्चर किया जाता है और कुछ पार्ट को मतलब ग्रेजिंग के लिए पेस्टोरलिस्ट के लिए छोड़ दिया गया है. सो दीज फॉरेस्ट आर कॉमन एनिमल आर फाउंड इन दीज, दे आर टाइगर, पिग, डेयर, एलिफेंट. So use variety of birds, lizards, snakes and tortoises are found here. So one specialty of this forest, they can be divided into two part, moist and dry. So differently the animal and flora and fauna found in these kind of forest. Now the third one is that the thorn forest and scrubs. Thorn forest, by the name you can understand कि thorny bushes and scrubs are found in these forest, यानी कि कंटीली झाड़ियाँ इस तरीके के इनका ये मेनली प्लांट्स हैं which can be shown in the picture. So the region with 70 rainfall, less than 70, ठीक है, मतलब 70 centimeter of rainfall, less than natural vegetation consists of thorny trees, bushes, and these type of vegetation is found in the northern western part of our country. I think everyone must understand which part we are talking about. So here, like in the map, this part is generally we are discussing. So including the semi-arid region Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Uttar Pradesh, Haryana, and acacia palms and euphorbias and cacti are the main plant of this species. Trees are scattered and have long roots penetrating deep into the soil in order to get moisture. मतलब इनकी जो जड़ें हैं नीचे बहुत गहरी होती हैं, लेकिन प्लांट्स की हाइट कम होती है, ट्रीज़ की हाइट कम होती है. क्यों? क्योंकि मॉइस्चर लेने के लिए जो रूट्स हैं वो डीपली अंदर तक जाती हैं और बाहर जो है वो आपका बहुत कम हाइट में होते हैं ट्रीज़.
So the stems are skeleton succulent to conserve the water. मतलब जो इनके स्टेम्स हैं वो भारी होते हैं, मोटे होते हैं, और उनमें कंजर्वेशन ऑफ वाटर ज़्यादा होता है. लीव्स आर मोस्टली थिक एंड स्मॉल टू मिनिमाइज द इवेपोरेशन. मतलब बाहर अपनी नमी को नहीं जाने देती, अंदर मॉइस्चर और ये कैपेबिलिटी ऑफ कंजर्विंग वाटर ज़्यादा होता है लीव्स के अंदर. समटाइम्स यू हैव सीन द कैक्टिस प्लांट्स जो कि सबके घरों में मिल जाता है, तो स्पॉन्जी होते हैं लेकिन पानी की अवेलेबिलिटी रहती है. दीज आर मोस्टली थिक एंड स्मॉल, मिनिमाइज इवेपोरेशन, एंड दीज फॉरेस्ट गिव अ वे टू थॉर्न फॉरेस्ट स्क्रब्स इन द एरिड रीजन. एरिड रीजन होता है जहाँ पर किसी तरीके की बारिश या मॉइस्चर नहीं होता. तो इन दीज फॉरेस्ट कॉमन एनिमल्स आर रेप्टाइल्स मेनली, rat, mice, rabbits, fawk and wolf, tiger, lion, wild ass, horses, camel are the animal species which found in this forest. So now another is that is montane forest. Montane forest, in mountainous region, the decrease in the temperature with increasing the altitude leads to the corresponding change in natural vegetation. Now here we have to clearly understand this. Decrease in the temperature means suppose we are moving latitudinal onwards. ठीक है, हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो क्या होगा, टेम्परेचर जो है लैटिट्यूडनली भी और अल्टीट्यूडनली भी डिक्रीज होता चला जाएगा. लेकिन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट माउंटेनियस रीजन की हम लैंड से माउंटेन की तरफ मूव कर रहे हैं, तो क्या होगा, टेम्परेचर ऑब्वियसली डिक्रीज होगा. So corresponding changes in natural vegetation, we can see the changes in natural vegetation such as the succession of natural vegetation belts in some order, as we see from tropical to tundra region. Tropical to tundra region, here we can, the trees which are on plain region, they are of, you can say, little height but much expansion of the area. ठीक है. उसके बाद अगर हम थोड़ा हाइट पे जाते हैं तो ट्रीज आर the stem and the trees are same kind of longer like this. When we are moving another hilly region, so we find such kind of trees. ठीक है, इस तरीके का मिलता है, तो we can understand this. So the wet temperate type of forest are found and between the height of 1000 to 1000 मीटर. तो अगर हम 1000 से 2000 मीटर तक की हाइट पे है तो हमें वेट टेम्परेट फॉरेस्ट मिल जाएंगे. एवरग्रीन ब्रॉड लीफ सच एज द ओक एंड चेस्टनट प्रीडोमिनेट. तो यहाँ इस तरीके के बेसिकली पेड़ आपको ज़्यादा मिलेंगे. वी प्रोसीड टू 1500 to 2000 meters the temperate forest containing coniferous. फिर यहाँ पर coniferous trees मिलते हैं like pine, deodar, silver fir, spruce and cedar are found. These forests are mostly southern slope of Himalayas. जैसे हम शिवालिक्स की बात कर रहे हैं, where we will live. So places having high altitude in southern and northern eastern India. At the higher elevation, temperate grasslands are common. At the high altitude, generally more than 3060 600 meters above the sea level, temperate forest and grassland give a way to alpine vegetation. Means you can see the connectivity of the vegetation. Firstly we found the temperate, then evergreen, deciduous and alpine kind of vegetation we get, like silver fir, junipers, pine, birches are the common trees of this forest. So these kind of picture you can see easily in Google or internet. With the help of internet you can understand. Otherwise some are given in the picture and also I made for you. So this kind of vegetation we proceed to the higher altitude region. So however they get progressively stunned. लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब हमारा स्नोइंग रीजन शुरू होता है तो ट्रीज का हाइट कम हो जाता है, हमारा स्टर्न ट्रीज मिलते हैं. स्टर्न का मतलब है बोने टाइप के, छोटे टाइप के ट्रीज मिलते हैं. क्यों? क्योंकि आप देखते हैं कि हार्श टेम्परेचर जहाँ पर भी है, वेदर इट इज़ कूल और वार्म या हॉट है, तो ऐसी जगह पे हाइट क्या हो जाती है, कम हो जाती है. एंड समटाइम्स एरिया बिकम डिवॉइड ऑफ वेजिटेशन. सो अल्टीमेटली थ्रू द shrubs and scrubs they merge into the alpine grassland and these are used extensively grazing by the nomadic.
और ये एरिया जो है ग्रास लैंड के पर्पज से यूज़ किए जाते हैं बाय द ट्राइब्स पीपल लाइक गुजर्स एंड बाकरवाल्स, जो कि जम्मू एंड कश्मीर के हैं और आपके हिमाचल के हैं। एट हायर अल्टीट्यूड मॉसेस एंड लिचेन्स आर द पार्ट ऑफ द टुंड्रा वेजिटेशन। अगर इससे भी ऊपर हम जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, लिचेन्स और मोजेस, जो टुंड्रा वेजिटेशन पार्ट ऑफ वेजिटेशन है। ठीक है। एंड कॉमन एनिमल्स आर फाउंड इन दिस द कश्मीर स्टैग, स्पॉटेड डेयर, वाइल्ड शीप, jackrabbit, etc. Tibetan antelope, yak, snow leopard are common kind of animal in this region. Shaggy horned wild ibex, bear and rare red pandas, sheep and goats with the thick fur or hair are found. Also, we have discussed three kind of category of forest, that is tropical evergreen, deciduous forest, tropical deciduous forest, then thorny forest and mountain forest. Now last one is left, that is वो है आपका मैनग्रोव, तो विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।